So a very good evening to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So I hope you are aware that today we had an examination of Christ University written examination. I hope many of you have attempted it. And right now we are going to start our detailed examination analysis. Okay. Today that is 8 मई को आई होप आपको पता होगा कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ और आज के इस क्लास में हम लोग जो है उसका डिटेल एग्जामिनेशन एनालिसिस करेंगे. सो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल जस्ट राइट इन द कमेंट्स यस सर यू आर ऑडिबल. ओके सो यस अगर कोई किसी ने क्लास लाइव एग्जाम दिया है so you can write that yes this question was asked and all. Okay, so yes we have got many questions in the examination pattern or the type of questions asked from our students, and I have made you can say a memory based you can say questions and all also. Okay, so let's start. Okay, first of all we'll be discussing about what the first thing we'll be discussing is Christ University exam overview. Then we'll be discussing the key highlights. Then we will be discussing the difficulty level. Then in this class we will be discussing about the good number of attempts, that if you have attempted this much then I think you are at the right place. Yes Koshi, you have attempted the examination. Okay, so we'll be discussing about it. You can answer in the live chat. Christ University section wise breakdown, किसमें किस section से कितना question आया, किस type का question आया, which type of questions were asked and all. We'll be discussing it. Then memory based questions means the questions which were asked in the examination the students came out and told us. ठीक है, एग्जाम के बाहर रखे हम लोग को जो जो लोगों ने बताया बच्चों ने उसको हम लोग आपके सामने रखेंगे. Yes, okay. So how was the examination for you? If you have attempted it you can write in the live chat कि सर एग्जाम अच्छा था, स्पीड जल्दी हो गई, लेंदी था. You can answer it. What was the positive aspect, the negative aspect of it? What are the tough questions? What were the easier questions? You can write in the live chat if you have attempted this examination. आप live chat में लिखिए अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि एग्जाम बहुत टफ था या ये वाला सेक्शन टफ था, ये वाला आसान था, आपका क्या ओपिनियन है. अगर आपने एग्जाम दिया तो आप लिखो ताकि we'll also appreciate it, we'll listen and incorporate your advices also. Paper was easy. Okay Vivek, then I think हो सकता है थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर चला जाए. It depends upon your preparation. ठीक है, so इसका मतलब सर pretty nice, good. खुशी, अवस्थी and Vivek, I am listening reading that both have done good. Good, very good. अगर अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिखिए, कितना आपने अटेम्प्ट किया. आपने आके गूगल पे सर्च किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस वेरीफाई किया होगा, आपको कितना लगता है कितना सही हो सकता है. It went well, time was enough. Okay, good. Reading comprehension were a bit more and time taking. अच्छा खुशी. तो रीडिंग कंप्रिहेंशन जो था अकॉर्डिंग टू यू थोड़ा सा टाइम टेकिंग था ऑफ कोर्स, बट इन ऑल पीपल आर वेरी हैप्पी. आउट ऑफ 120 आई हैव अटेम्प्टेड 90 to 100 क्वेश्चन. गुड, वेरी गुड रोहन. 85 to 120 मार्क्स सेफ. हाँ 85 90 अगर आ रहा है तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपको आराम से मिल जाएंगे. खुशी सिंह 98, वेरी गुड. देन अगर 85 80 प्लस आ रहा है, 90 प्लस बहुत सारे लोग को आ रहा है, सो आई थिंक यू ऑल विल यू कैन से get good colleges. I hope so. So before moving on, there's a small announcement for those who are attempting next year, जो अगले साल attempt करेंगे for BBA, IBM, Hotel Management, Christ University, CUET. These are the batches which we are launching. ठीक है, अभी एक batch launch करने जा रहे हैं हम लोग. If you have any query, you can call on this number 8806130414. इस पर कॉल कीजिए और you can call on this number 9650052904. जब इस पे कॉल कीजिए या इस पे कॉल कीजिए and you will get to know about this course. Okay, now let's discuss about the examination overview. ऐसे जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको पता है, but those who are attempting the next year, जो अगले साल प्लान कर रहे हैं उनके लिए एक आइडिया देते हैं. So the examination, the Christ University BBA examination, it's the name. Then conducting body is Christ University, है ना. CUET कहते हैं ना, Christ University Entrance Test इसकी बात हो रही. वो वाला CUET नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला. This is Christ University Entrance Test. This is of course at the undergraduate level. The examination was online mode. 90 minutes का होता है. So in 90 minutes you are supposed to solve 120 questions. 90 मिनट में 120 क्वेश्चन. थोड़ा सा स्पीड ज्यादा चाहिए थी, बट yes people are saying, my students are saying कि बहुत आसानी से हो गया, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं था पेपर. So I'm happy that yes you all have performed very well in it. Of course objective type MCQ based questions are there.
then if you are right, +1 marks will be given. If you are wrong, -0.25 will be cut. ठीक है, सही हो तो 1 नंबर मिलेगा, गलत हो तो -0.25 मिलेगा, मतलब नंबर घट जाएगा. अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो 0 मिलेगा. इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड देन यू विल गेट 0, राइट. करंट अफेयर्स में दिक्कत हुई है विवेक, मैंने भी कुछ क्वेश्चंस देखा जीके का, थोड़ा सा मतलब इधर उधर से भी आया था. यस, यू आर राइट. हाँ, नाउ यू कैन सी द सेक्शंस. सो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो दे हैव आस्क्ड फ्रॉम इंग्लिश 32 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट. ठीक है, then general knowledge से almost 20 questions, then mathematics से 20 questions, data analysis and interpretation 18 questions, logical reasoning 20 questions, and then fundamental accounting 20 questions. So out of 120 questions 120 क्वेश्चन में 32 क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश को दिया है. आपने देख रहे हो, you can see it here. Then 3 to equally to GK, maths and logical reasoning, इन तीनों को लगभग बराबर वेटेज दिया है, 20. Then 18 to data analysis and interpretation, then fundamental accounting को 10. Okay, yes. हाँ, जो लोग देख रहे हैं, please press the like button, share and subscribe to our channel. So please share this video with your friends whoever has attempted it or who is going to attempt the next year. Okay, so the second slot of Christ University was conducted today. I hope you are aware, via online home proctored mode examination. है ना, घर पे बैठ के लेकिन home made proctored examination हुआ. Yes, majority of you are saying कि आसानी था, कुछ लोग मॉडरेट कह रहे, बट इन जनरल यस, आई वुड से इट्स मॉडरेट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी, और बीच का था. ठीक है, एंड सेक्शंस वेर जम्बल्ड, मतलब ऐसा कुछ नहीं आया था जैसे होता क्या कि इंग्लिश का अलग सेक्शन, देन जीके का अलग सेक्शन. सो इट वाज नॉट लाइक दिस. सो देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, देन जीके, देन मैथ्स, देन डाटा एनालिसिस. सो दे हैव नॉट सेपरेटेड द सेक्शंस. ठीक है, ये मतलब हुआ. That is what you can expect if you are attempting next year. अगर आप 2023 की तैयारी करना चाहते हो, so you have to be prepared for this. These types of questions, these types of patterns will be there. Okay. Then no on-screen calculator, यानी कि आपके स्क्रीन पर कैलकुलेटर नहीं अलाउड था. ठीक है, so you are supposed to do rough paper calculation by your pen at that moment, and there was no calculator available. यानी स्क्रीन पर वो कैलकुलेटर भी नहीं दिया गया था. Yes, this is what surprised even me also, that they asked a lot of questions from biology. मुझे भी थोड़ा सा जानकर हैरानी हुई कि बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आए. लाइक दे आस्क कि यहाँ पर कौन सा ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड. देन आई थिंक दे हैव आस्क्ड अबाउट मैनी थिंग्स रिलेटेड विद प्योर बायोलॉजी एंड ऑल. ठीक है, तो वो थोड़ा सा इट्स लिटिल सरप्राइजिंग, बिकॉज हाउ विल यू यूज दिस बायोलॉजी इन बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. एंड करंट अफेयर्स वाज लेस, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा नहीं था, बट बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आया था. ठीक है, DI was not calculative in quant, arithmetic part is more in quant. ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा arithmetic और quant सब slightly you can say intermixed था. Okay, so I hope you are aware that after written examination we will be having micro presentation, personal interview. ये होता है ना. So for this the process will start from 12th May. ये वाला जो process है वो 12 मई से आपको start हो जाएगा. Okay, for MP. That is micro presentation and personal interview, and then finally you get the final result. Okay, so this is how the section wise toughness. Verbal ability easy था, general knowledge generally लोग बोले moderate था, कुछ लोगों के लिए tough था because they ask questions from biology and all. ठीक है, quantitative ability moderate था, data analysis interpretation moderate, logical reasoning easy to moderate, fundamental accounting moderate, और overall अगर कहें so the examination was moderate, not very tough, not very easy. बहुत मुश्किल भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था, बट मॉडरेट था. ठीक है, द नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स, देखो लगभग 32 के आसपास क्वेश्चन पूछा था. सो 22 to 28 if you have attempted it's good, fine. जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन के आसपास था. इफ यू हैव अटेम्प्टेड 10 to 15 16 क्वेश्चन इट्स फाइन. देन क्वांट में अगर आपने 14 to 15 किया है, लॉजिकल रीजनिंग में 15 to 17 किया है, डाटा इंटरप्रिटेशन में 10 to 13 किया है, फंडामेंटल अकाउंटिंग में 5 to 6 किया है, तो आप सही जा रहे हो. हाँ, किसी में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में ये कम होगा तो किसी में ये ज्यादा हो गया होगा. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपर्टीज इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड सेक्शंस. यस, सो दिस इज इन जनरल विल बी कंसीडर्ड एज गुड अटेम्प्ट्स. तो मतलब 75 प्लस अगर हो तो इट्स मीन आई वुड से इट्स गुड इनफ, है ना. 80 प्लस इट्स वेरी गुड. कुछ बच्चे लिख रहे सर मेरा 90 प्लस आ रहा है, 85 प्लस 90 प्लस, देन आई वुड सजेस्ट यस इट्स अ गुड वन. क्या क्या आता है लॉजिकल रीजनिंग में? ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, एनालॉजी,
short puzzle direction, seating arrangement, counting of figures, clock, classification, number series, alpha series, mathematical operation, statement based questions. These are generally asked in the logical reasoning. Then in section wise in English section, they ask sentence correction, analogy, reading comprehension, phrasal verbs, question tag. ये सब आपने देखो ग्रामर्स ये सब पढ़ा होगा. These are grammars from school days, है ना. स्कूल डेज में सब बताया जाता था, आपको याद होगा. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसका एक वर्ड होता है, आप बताओ उसको. ऑड वन आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसलेनियस. दे आस्क दीस टाइप्स ऑफ things in English. It's not very tough, and these are actually from mostly from 9th 10th class. 11th 9th 10th में बहुत सारी चीज पढ़ाई जाती है, blood relation, Venn diagram and all. So it's not as much tough. Then area of triangle, mensuration, 3D 2D, coordinate geometry, straight line, time, speed, distance, probability, progression, LCM, HCF, set theory, profit and loss. ऐसा कहा जा रहा है कि LCM, HCF से they ask questions and all. Yes. NMIS Mumbai or due south campus, which is better? Bhuvan, it depends upon you also. मतलब आपकी nearest to your house, आपके घर से कौन करीब पड़ रहा है, ठीक है. Not both are you can say more or less better, ठीक है Bhuvan. It depends upon you can say fees पर depend करता है. It depends upon which is near to you, where whether you hostel is available or not. So सिर्फ ranking से नहीं होता है, but a lot of things. So DU South campus is also very good. There's no doubt about it. And NMIS Mumbai is also good enough. So you can decide by seeing all these things कि फीस किसमें कितना ज्यादा है, आपके घर से कौन करीब पड़ रहा है, which is near to you and all, ठीक है. Okay, then Christ University section wise data analysis. तो आप देख सकते हो data analysis interpretation में pie chart होता है. I hope you are aware this is like something like this. Pie chart होता है ना, bar chart, tabulation, frequency distribution. These are basically the part of maths. अगर आपने class 9 10 में भी थोड़ा बहुत maths पढ़ाया जाता है ना. Yes, over and above you are supposed to read something more about it. Now, जनरल नॉलेज में कुछ लोग मॉडरेट्स बता रहे हैं, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, स्टैटिक पोर्शन जो था स्पेशली इट वाज मॉडरेट टू हार्ड बिकॉज दे वेंट इन डिटेल इन बायोलॉजी, स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी एंड पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. लोगों ने ये उम्मीद नहीं किया था कि बायोलॉजी से इतना डिटेल पूछेंगे. आई थिंक मेनी क्वेश्चंस आर फ्रॉम 9th 10th, इनफैक्ट एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चंस कुछ आए है ना. So yes, they can ask questions from here also, and you have to be ready for it if you are attempting next year. अगर आप अगले साल attempt ले रहे हो तो इसके लिए भी आपको ready रहना होगा. So yes, in cyclorics, if you are getting 88 to 90, then your score is actually very good. ठीक है. Okay. Then Christ University section wise fundamental accounting, the level of difficulty were moderate enough, and 5 to 7 questions were from this section. So जो accounting वाले field के लोग होंगे, that would have been better for them. So let's discuss some of the GK questions. देखो least cleanest city 2016 ने पूछा है. It is tough because they are asking 5-6 years back, तो थोड़ा difficult है of course. So the answer is Dhanbad. Then हैरी पॉटर की फर्स्ट बुक, हैरी पॉटर एंड फिलोसोफरस स्टोन जो है, ये फर्स्ट बुक है. ये तो काफी फेमस है, आपने सुना होगा नाम. रिटन बाय J.K. Rowling, is the first version of or first part of हैरी पॉटर. फिर उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ 2018, 2018 की वुमेन क्रिकेटर कौन थी आईसीसी की? नन अदर देन स्मृति मंदना. ये क्यों आवाज आया था? हैज वन रैशल हेहो फ्लिंट अवार्ड रिसेंटली. तो इन्होंने रिसेंटली रैशल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी जीता है. सो शी वन आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018. 3-4 साल पहले वो उसका सवाल पूछ दिया. अर्थ रिवॉल्व्स इन वेस्ट व्हिच डायरेक्शन? सो इट्स वेस्ट टू ईस्ट कहते हैं इसको. अगर ये पूछा जाए कि अर्थ किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, सो राइट, अर्थ रिवॉल्व्स लाइक दिस. ठीक है. अर्थ रोटेट्स एक्चुअली होता है, रोटेट्स नॉट रिवॉल्व, है ना. तो अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये टिल्टेड एक्सिस पे, तो इट रिवॉल्व्स लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड एज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं इसको. चाहे तो ये एग्जाम में पूछेगा, या ये पूछेगा कि अगर आप नॉर्थ पोल से देखोगे या पोलरिस नॉर्थ स्टार से देखोगे, और पोलरिस दिस इज कॉल्ड, if you see from north star or polaris how the earth rotates, so it will rotate like this, and that's called as anti-clockwise direction या counter-clockwise direction. तो अगर आप नॉर्थ पोल से अगर यहाँ से देखोगे ना अर्थ, या मान लीजिए यहाँ पे आपकी आंखें और ऐसे देखोगे, so it will rotate like this, anti-clockwise direction, and that is why you will find sunset
sunrise in the east first. कहते हैं ना sun rises in the east. Why? Because the earth rotates from west to east. ऐसे घूमता है west to east, इसीलिए. ठीक है? Just remember this. Then this is called as the next was Delhi's 7th consecutive budget. So budget is presented by finance minister. ये तो पता होना चाहिए, है ना? Every year, whether it's union level or state level or union territory level. So of course the chief minister, the deputy chief minister and the state finance minister Manish Sisodia presented the budget. So basically they were asking who is the finance minister of Delhi. Okay. India's rank in climate change index, it had got 10th rank recently. It was coming in the news, so I should expect you to answer it. What are the foundation blocks of protein? उसको amino acid कहते हैं because amino acid की linear sequence से proteins बनता है. ठीक है? Okay, so the sequence of amino acids add up to form protein. I know it's a slightly tough question. ये मुश्किल question था और एक्सेस वाला गलत हो गया. कोई बात नहीं, विशेष जॉब है, इट हैपेंस. आई अटेंड 120 आउट ऑफ 97. खुशी सिंह, वेरी गुड. ठीक है. जीसीडी कहां पर है खुशी सिंह? आई कुड नॉट सी जीसीडी. कहां पे लिखा हुआ है? वेयर इट इज रिटन? विच किस बैकग्राउंड में लिखा है बताओ तो आई विल एक्सप्लेन इट. ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली अबाउट यू कैन से दे आस्क अबाउट प्रोटीन्स एंड ऑल. एक क्वेश्चन कुछ लोग बता रहे थे कि वो गोइटर वगैरह से रिलेटेड, आयोडीन से रिलेटेड पूछा, आयोडीन की कमी से क्या होता है, या यहाँ पर कौन सा ग्लैंड होता है. दैट्स कैन से थायराइड ग्लैंड के बारे में परहैप्स पूछा है ना. सो दीस वर द क्वेश्चंस बिकॉज ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. सो कुछ बच्चों ने हमको बताया, मैंने कई जगह देखा भी. सो 75 to 77 इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ. अगर आपका 85 90 आ रहा है, वेरी गुड, बिकॉज कुछ तो गलत होंगे. एंड मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग इट यू शुड गिव +1 मार्क्स. And if you have done wrong, you should penalize yourself by -0.25. And then finally calculate कि अगर इससे ऊपर आ रहा है, if you are getting 80+, then you are very good. ठीक है. आप ये देखो कि आपका कितना सही हुआ, उसको +1 करो. जो गलत हुआ उसको -0.25 से मल्टीप्लाई करो, जितने भी क्वेश्चन गलत हुए. फिर फाइनली देखो अगर 75, 77 या 80+ आ रहा है, so you are on the safer side, I would say. Okay. So this is all about today's class. All the best from my side. I hope that you all will get selected for the interview, and at the final you will get the final result also. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Please press the like button, share and subscribe to our channel. Thank you everyone. Thanks for watching.